Hello students, my name is Ramanjit Kaur from Police Public School, Mansa. I hope you are maintaining your link in your studies while sitting at home. I wish you all the best for your coming session. So we will continue further with the same chapter, Resources and Development of Geography, Class 10th, Part B, Chapter 1. Resources and Development. Sustainable Development. Sustainable development means that is conducted without depletion of natural resources. बिना नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किए बिना, खराब किए बिना जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है वो होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स दैट डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट. बिना हमारे एटमॉस्फेयर को और एनवायरनमेंट को डैमेज किए बिना जो डेवलपमेंट होती है दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन. आज की जो डेवलपमेंट है वो आने वाली जनरेशन की, फ्यूचर जनरेशन के साथ जो कॉम्प्रोमाइज ना करें, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. लैंड अंडर इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स इन इंडिया. प्लेन 43% एरिया is covered of our India. Plateaus 27%, mountains 30% area is covered. This is all about the relief features of India. Land degradation. Land degradation. Land degradation क्या होता है? Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate steps, measures to conserve and manage it. कॉन्टिन्यूस जब हम अपनी लैंड की जो है को यूज करते हैं, उसको इस्तेमाल में लाते हैं बिना प्रॉपर स्टेप्स उठाए, बिना लैंड की जो है फर्टिलिटी, उसकी उपजाऊ शक्ति देखते हुए उसको कंजर्व करना, उसको संभालना, मैनेज करना जो है, उस तरफ हमारा ध्यान जब नहीं जाता तो हमारी जो लैंड है वो डिग्रेड, दिन ब दिन जो है उसकी फर्टिलिटी रेट जो है डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है, गिरनी शुरू हो जाती है. तो इसके लिए हमें जो है लैंड की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमने कुछ जो है इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाने हैं. मेजर लैंड डिग्रेडेशन. डिग्रेडेशन मींस डिप्लीशन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स. एफॉरेस्टेशन मींस प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज. प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग टू कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स. स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स. सैंड ड्यून्स आर hill of loose sand by growing thorny bushes. Thorny bushes grow करके. Control of mining activities. Mining activities can also be controlled. Avoid over irrigation. That is done in agriculture these days. जो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल पानी का कर रहे हैं और हमारी ज़मीन के नीचे पानी का लेवल दिन ब दिन नीचे गिर रहा है. Avoid over use of fertilizers and pesticides. ज़्यादा यूज करना इन केमिकल्स का दैट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर एग्रीकल्चर एंड मैनी मोर सच एक्टिविटीज. सॉइल erosion. The denudation of soil cover. Denudation means wearing away of Earth's upper layer by wind, ice and running water. And subsequent washing down is soil erosion. Washing away of the upper layer of the soil is soil erosion. जो जमीन की ऊपरली तह है वो किसके द्वारा जो है प्रभावित होती है? बाय विंड, बाय ग्लेशियर, आइस एंड रनिंग वाटर. द रीजंस फॉर सॉइल erosion आर, क्या क्या कारण आ गए इसके? ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, cutting of trees, overgrazing by animals and construction activities that are going down in these days. Natural forces, कुदरती forces जैसे like wind, glaciers and water flow. These are all natural forces. Methods to prevent soil erosion. What are these methods? Plowing along counter lines. Counter lines पे जो हमारी क्या होती है? खेती होती है. Terrace cultivation, step farming, done on hills, strip farming. And shelter beds and many more. Shelter beds means growing of trees in a row, in a line, so that our land और हमारी जो है जमीन वो अफेक्ट ना हो. We can grow shelter beds means rows of a column of trees, एक लंबी लाइन में
तार किसकी? दरख्तों की। Soil and its types. What are these soils? These are alluvial soil, black soil, red and yellow soil, laterite soil, arid soil, and forest soil. These are the different types of soils found in India. First one is alluvial soil, found in northern plains and eastern coastal plains, rich in potash, phosphoric acid, and lime. कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं? क्रॉप्स ग्रोन आर शुगर केन, पैडी, wheat, etc. Then is black soil, black in color and found in plateaus of Maharashtra, Malwa and Madhya Pradesh area. Black soil is one of the most richest soil, the most fertile soil, made of extremely fine clay material. Crops grown are cotton, rich in calcium carbonate, magnesium, potassium and lime. Red and yellow soil, found in areas of eastern and southern parts of Deccan Plateau, Chhattisgarh and Odisha. Rich in crystalline and metamorphic rocks. Crops grown, कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं? Maize, oilseeds, pulses, millets, potato, etc. Laterite soil, found in areas of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and hills of Odisha and Assam, the southernmost and the western part of India, rich in iron and aluminium. Crops grown are coffee, rubber, tea, cinchona, coconut, areca, etc. Found in western parts of Rajasthan. These soils are poor and contain little humus and organic matter. ये जो soil है arid soil, that is of very poor quality. It contain little humus means बहुत कम नमी इसमें पाई जाती है. Crops grown are groundnuts, corn and pulses. Then forest soil, found in hilly and mountainous areas, loamy and silty, in valley sides but coarse grained in upper slopes. Loamy and silty means it is very rich soil, बहुत ही fertile soil है जो forest soil है, and sand and silt mixture is found in loamy and silty soil. So crops grown are wheat, maize, sorghum and groundnut, etc. So these were all type of soils. First one alluvial soil, black soil, red and yellow soil, laterite soil, arid soil and forest soil. We have done sustainable development, then the land degradation, measures to avoid land degradation that we have studied in this chapter, and soil erosion, that is clear to you, and soil and its different types. So this was all about our chapter resources and development, part 2nd. So I think you must have understood this chapter. That was all about resources and development. Thank you and have a nice day.